Hello friends, welcome to my channel Equanimous IAS, and आज we're doing the part 2 of the introduction that we began to this channel and to the preparation of UPSC. So in part 1 we already had discussed the prerequisites, that is the 4 principles which are required even before you sit for the exam. Today we're going to discuss the further aspects of UPSC preparation that are needed even before you begin properly, or the parts that we call strategy. So today we're going to begin the different aspects of strategy. The second thing after those four principles will be syllabus and how to understand the syllabus and what are the aspects of actually completing the syllabus of civil services preparation. The second aspect will be what are the kind of things that we need to be careful about while writing an essay or preparing for the personality test or the interview. And thirdly, we will briefly touch upon the sources. So let's begin with the first part, which is the syllabus. Now, what do we mean by UPSC syllabus? One is the syllabus that has been issued by UPSC and is constantly issued through its different notifications. It has if you talk about mains, it has 4 GS papers, it has 1 essay writing papers, and 1 optional which has 2 papers, and then it has qualifying exams. So in all there are 9 papers, out of which 7 papers are scoring and 2 papers are qualifying, that is English qualifying and 1 Indian language. So when it comes to syllabus, how to deal with that? So the first thing to do will be to make 4 registers for 4 GS papers. Now there are 2 principles or 2 strategies which have to be followed. The first strategy is what I call synthesis, and the second strategy is what I call the combination of assimilation and production. What do we mean by this? So आप पहले जो GS है GS1 उसका सिलेबस किसी एक रजिस्टर में टॉपिक वाइज लिख लीजिए, जैसे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पर्सनैलिटीज एंड इवेंट्स. तो इवेंट्स का एक पेज हो गया और पर्सनैलिटीज का एक पेज हो गया, इश्यूज का एक पेज हो गया. इसी तरीके से ज्योग्राफी का सिलेबस है, डिफरेंट वाटर बॉडीज, तो उसमें डिफरेंट वाटर बॉडीज का एक पार्ट हो गया. इसी तरीके से अगर पेपर 2 की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डिफरेंट अंडरपिनिंग्स, बेसिक फीचर्स का एक हो गया, जिसमें सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेट्रा आ जाएंगे. तो ऐसे ही पेपर 3 और पेपर 4 के भी अलग अलग 4 रजिस्टर्स आप मेंटेन कर लीजिए, ईच टू 1 पेपर. तो उसके बाद क्या होगा? नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल कॉल्ड सिंथेसिस. तो इसमें क्या करेंगे? आप लगातार स्टैटिक और करंट पढ़ेंगे. सिलेबस यू शुड रिमेंबर, यू शुड हैव द टॉपिक्स इन माइंड कि क्या क्या टॉपिक्स कौन कौन से पेपर में लगे हुए हैं. जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, स्टैटिक जब आप पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स जो आपने रजिस्टर में बनाए हुए हैं उन्हीं के नीचे आप नोट्स अपने या तो पेस्ट कर दें या नोट्स लिख लें. तो ये तो हो गया स्टैटिक जो आप पढ़ रहे हैं. करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे, द हिंदू आप रेगुलरली फॉलो करें, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज जरूर फॉलो करें. इसी तरीके से कई लोग डाउन टू अर्थ फॉलो करते हैं, कई लोग योजना मैगजीन भी पढ़ लेते हैं. वो अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से सबको डिसाइड करना है. वी विल कम टू दैट इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द क्लासेस. तो अभी आपको क्या करना है? स्टैटिक के साथ करंट को सिंथेसाइज करना है. जैसे चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स वाले जो पेज है उस पर आपने नोट्स लिए हुए हैं. उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई बेसिक फीचर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके साथ साथ सेक्युलरिज्म है, उसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप है. अब मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे करंट अफेयर्स में बड़ी धूम मची हुई, तो आप क्या करेंगे? जो सिंगल सिटीजनशिप या सिटीजनशिप एस्पेक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसका जो आपने पेज बनाया हुआ है सिलेबस के हिसाब से, आप उसी में अभी जो बात आ रही है करंट अफेयर्स में, वो भी वही सिंथेसाइज कर लेंगे, वो भी स्टैटिक के साथ ही करंट को भी आप जोड़ लेंगे. उससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी नया आएगा
आप वो ही आगे से ऐड करेंगे उस सिलेबस के हिस्से में। कई बार जो आर्टिकल्स हैं उसमें भी बार बार चीजें रिपीट होती हैं। हर आर्टिकल एक इंट्रोडक्शन के साथ चालू होता है। एवरी आर्टिकल हैज द बैकग्राउंड टू इट, सो यू विल skip the things that you've already added in that register and you will only add what is the new substance. So जो भी नया मटेरियल आएगा वही ऐड करेंगे, तो इससे आपके जो नोट्स हैं वो स्लिम रहेंगे और उनको रिवाइज कर पाना आसान रहेगा। डुप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। Once you're able to avoid this duplication of subject matter, revision will become fairly easy, and this is one of the mantras of UPSC effective preparation, that you must keep your notes as slim as possible, as crisp and precise as possible. So this is the first principle that you have to practice while maintaining the registers for different syllabus. Optional will come to later. Down the line in this channel we will be beginning the optional classes also, but that will be couple of months down the line. अभी जो दूसरा aspect है, the second principle that I talk about, this is the principle in which we ensure assimilation along with production. So production and assimilation go hand in hand. Effective combination of assimilation and production. Now what is assimilation? हम जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्स तैयार हो रहे हैं, सिलेबस तैयार हो रहा है, प्रिपरेशन इज getting ready, we are preparing. This is assimilation. We are assimilating, we are accumulating knowledge and content in our mind. The second and equally effective aspect is production, the answering part. कई लोगों को ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से सारी चीजें मालूम होती हैं, सारे एस्पेक्ट्स मालूम होते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बारी आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आजकल में यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2021 और 22 के जो मेंस के एग्जाम है उसमें जैसे एक क्वेश्चन आया, मैंडेट बताना है ओबीसी कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका मैंडेट बताना है। तो उसमें आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा, या कैग का मैंडेट कौन से आर्टिकल्स के साथ उसका मैंडेट बताना है, तो इफ यू डू नॉट रिवाइज ओवर एंड ओवर एंड इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, तो जो आपने पढ़ा है वो आपको मालूम है लेकिन वो इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज टू बी डन? द स्ट्रेटजी इज टू टेक टेस्ट सीरीज, टेक द प्री एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग एब्सोल्युटली सीरियसली, and we will have a separate video also on test series and how to actually make the best use of different test series and answer writing. So we'll come to that, but make sure it begins right from the word go. You subscribe to a pre-test series, you write answers and try to use different strategies, different techniques. One technique is the smart guessing, one technique is elimination. So how to use them effectively and how to find out as to what your niche is. कई लोगों के 70 से 80 अगर वो टिक करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव स्कोर आता है, कई लोगों का 60 से 70 में ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा एक्यूरेट स्कोर आता है। तो वो हमें देखना है, वो हमें टेस्ट सीरीज से ही, यू विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, तो वो टेस्ट सीरीज से आएगा। Now the third aspect to the introduction, today's introduction, is how do we make sure our essays are absolutely scoring. So essays के कई पार्ट होते हैं। First and foremost, you must make sure that you are into a bit of literature. On the sidelines, maybe 10 minutes, 15 minutes a day, you should read something pertaining to literature. Literature is important not because it is going to help you in essay writing and it is going to make you more expressive, more creative and more coherent, but literature is also important because it will make you more imaginative. But more than that, literature is important because that will reflect in your personality when you go for personality test which contains 275 marks. So उसके लिए पहली बात तो ये। दूसरा, essay is a reflection of your personality. तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचारते हैं, जैसा आपके मन में दृश्य चलते हैं, वही पेपर पर उतर आते हैं। तो वो बात भी सुनिश्चित करनी है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी हमें अभी से ही काम चालू कर देना है। The essay has to have interlinkages.
और क्रॉस लिंकेजेस, तो एक सब्जेक्ट मैटर को दूसरे सब्जेक्ट बॉडी से इंटरलिंक स्विफ्टली और स्मूथली करना, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच एकदम स्मूथली और स्विफ्टली होना हमें सीखना पड़ेगा. एंड द थर्ड एस्पेक्ट टू एन essay writing, of course, is to make sure that we are harking back to the subject matter over and over. जैसे आप डेमोक्रेसी पे ऐसे लिख रहे हैं तो पैराग्राफ के एंड में और शुरू में जो कनेक्टर्स आप यूज करेंगे, somehow they should be providing a hint that you're still talking about democracy in your essay. इंटरव्यू में किन चीजों का ध्यान रखना है? इंटरव्यू में ध्यान रखना है, there are 2-3 things which are demanded by UPSC. One is logical and coherent exposition. That is, your views should be logical. So you shouldn't be going there and talking that you have intense belief in evil spirits and ghosts, and you have seen one, and how ghosts have been helping you to write your mains and get good score. That will not fetch you any good marks. Or if you're somebody who just go and say that वो पीपल के पेड़ पे नारियल चढ़ा के आए हो और उससे जो है आपका ये एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो गया, उसमें 135 नंबर आए थे पिछली बार, नहीं, this will not be helpful. Make sure there is logic and rationality to the things that you're talking about. Scientific thinking would be definitely prioritized. Other than that, your personality should have what you call the presence of mind, or the sense of articulation and expressing yourself effectively. So presence of mind. Other than that, there are other things like quick thinking, and there are things like assimilation, quick assimilation. How good of a listener you are, whatever the board member is saying and asking, how seriously you're listening to them, and how deeply you understanding the question. कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ ऐसी ही बात कर रहा है जो शैलो है, सुपरफिशियल है, हमें मजा नहीं आता, हम उसको सीरियसली नहीं लेते. बट दैट लुक्स, स्पेशली अगर बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, तो दैट विल बी कॉट एंड you will not be getting good marks. This is just a skimping touch upon on the interview preparation. We will be dealing with it very effectively when we come to cross the bridge. And let me briefly touch upon the sources. NCERTs are very important, especially for geography, polity and economy. And I will be having a separate series on NCERTs. Please join that and make the maximum out of it. I'll be giving you notes also. Other than NCERTs, Lakshmikant is useful for paper 2. Spectrum is useful for paper 1 history, and world history and all NCERTs. That is what we are all referring to. Why? Because if you read the bulky books which are available in the market, but they do not have very good cost-benefit ratio. So, other than that, for geography, physical geography, we sometimes read GC Leong, but NCERTs are more than sufficient, as my experience tells me, coupled with current affairs. Geography में भी current affairs बहुत ज़्यादा important हो गया है. And environment, there are many books, but current affairs are very important to get a background. Shankar IAS book is also a very good book, and ethics lexicon is a very good book, but also focus on the examples and case studies and current events more. That is what is going to fetch you more marks. This is just a brief touch upon. We will be giving you a more intensive and extensive exhausting list on the sources and everything, and that's all for the introduction. Now, there are a couple of things. Motivation is equally important along with the preparation strategies. So I have a separate channel which is exclusively dedicated to the personality development, education, character building and motivation. The link to that channel will be shared in the description. Kindly subscribe and make the best of that channel. Take the maximum out of it. I'll be constantly updating that as well. Along with that, share this channel, share about this channel, so that the word reaches to the maximum people out there and everybody joins this initiative so as to get maximum benefit. You also subscribe this, like this and spread the word around. Let us co-learn, let us co-practice UPSC preparation, and let us co-educate ourselves and become better than yesterday. Thank you very much for being a part of this journey, and I'll be seeing you soon with the NCERT classes. Thank you very much.